Assalamu alaikum everyone. I am Rabia Manzoor and we were discussing chapter number 10, which is called normal distribution. In our previous lectures we were talking about the standard normal distribution. Now onwards we will talk about the normal distribution. As I have told you earlier, the difference between standard normal and normal. Standard normal is a random variable z. It belongs to a random variable which is called standard normal random variable z that has mean 0 and standard deviation 1. It is a special form of normal distribution. So in our previous exercises, in our previous exercise, if you review it, you will see the writer is talking about only z variable that has mean 0 and variance 1. Now onwards, we will talk about normal distribution or a random variable x. Now we ourselves, we will transform this random variable x into z and then we will solve the question of normal distribution. So from now onwards, we will talk about the probability of normal distribution. Let's have a look on the example. Okay, this is the example. The scores made by the candidates in a certain test are normally distributed with mean 500 and standard deviation 100. So see, we have a normal random variable. I don't know about whether it is x or z, but I have a normal random variable that has mean 500 and standard deviation 100. So obviously if I talk about z, that means its mean is 0 and its variance is 1. And as far as this example is concerned, we have a random variable that has mean 500 and standard deviation 100, which is a clear indication that the given random variable is normal. It's not standard normal. And it is clearly mentioned in the question. So we are talking about normal random variable that has mean 500 and standard deviation 100. So let's move to the solution. Now we have a random variable x that approaches to a normal distribution with mean mu and standard deviation sigma. Its mean is, which is represented by mu, is 500 and a standard deviation which is represented by sigma is 100. Part 1. Find the probability that the candidates receive scores less than 400. So now in part 1, you want to find the probability of the candidates who scored less than 400 marks in a particular test, or yes. So we can write it as probability that x is less than 400. This is the requirement of our question. As it is clear that we have random variable x, which is a normal random variable, and we want to solve it by using normal distribution. So first of all, what we will do, we will transform this x variable into z variable, which is standard normal. We will solve this question exactly as we have solved in the previous exercise, but only the difference is now we have a random variable x, and in previous questions z was given. Now we don't have z, we have x. So we will transform this x variable into z and then we will solve the question. Same as we have solved in previous exercise. So we have a random variable x that has mean 500 and sigma 100, and we want to find probability that x is less than 400. So we will convert, first we will find out a random variable z, which we will solve by using this question, sorry, this formula. And I already have a calculator with me, so I am going to apply this
formula that now I'm going to generate. Okay. Now we are going to find z, which is a standard normal random variable. Now x is 400 minus mu is 500 divided by sigma, that is 100. The answer is minus 1.0. Now this is our z variable, and as it is clear that we want to find this, so that is equals to, देखिए हमने यहाँ पे x की वैल्यू जब 400 पुट की है तो उससे हमारे पास z की वैल्यू माइनस 1.0 निकली है। तो हमने पहले x को जब z में ट्रांसफॉर्म करना है तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, z इस पॉइंट पे z की वैल्यू है लेस देन माइनस 1.0। I'm sure it is clear to you. So, all right. So x is less than 400 का मतलब है z is less than minus 1.0। इस पॉइंट पे x के इस पॉइंट पे z की वैल्यू जो है वो माइनस 1.0 है, एंड इसका मतलब है कि हम लोग x की बजाय इस z को फाइंड आउट कर सकते हैं, जो हम लोग स्टैंडर्ड नॉर्मल के टेबल से निकालेंगे। इट्स अ क्यूमुलेटिव टेबल जो टेबल नंबर 9 है। सो हम लोग इसको इस फॉर्म में लिखा और अब इसको हम लोग टेबल नंबर 9 से देखेंगे। ओके, यूजिंग टेबल 9 ओके लेट्स सी। माइनस 1.0 को ऑब्वियसली 2 डेसिमल नंबर्स में है तो मैं इसको माइनस 1.0 को माइनस 1.00 भी लिख सकती हूँ। सो आई विल चेक इट इन टेबल नंबर 9 एंड माइनस 1.0 को हमने देखना है 0 में। माइनस 1.0 को जब हमने 0 में देखा तो मेरे पास ये वैल्यू आई है, दैट इज इक्वल्स टू 0.15866। दिस इज द आंसर, 0.15866। सो दिस इज योर आंसर। Okay, now move to the next part number 2. In next part we want to find the probability that the candidate receive scores greater than 700. So in next part we want to find the probability that candidate receive score greater than 700. So mathematically you can write it as x is greater than 700. Now we want to find this probability. Okay. As it is clear that we want to find probability which is greater than, by using the previous theorems 10.3 and 10.4, it is clear. I have told you that it's greater than, कभी भी डायरेक्ट ग्रेटर देन की प्रोबेबिलिटी फाइंड नहीं होती, हम इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं फाई की फॉर्म में। ये देखिए, इसको मैं लिख सकती हूँ 1 minus phi of 700. ओके, सो अभी ये हमारे पास x वेरिएबल है। सबसे पहले हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे z वेरिएबल में। नाउ एज वी नो the z variable is
x minus mu divided by sigma. Now we will substitute the value, which is 700. Okay, I just copy paste this formula. X की जगह आ जाएगा 700, mu is 500 and sigma is 100. ये सवाल में मेंशन है और जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो मेरे पास आएगा 2. So z is equals to 2. You can write it as 2.00 as z deals with 2 decimal numbers. So ये z की वैल्यू है. अब इसको हम लोग इसको भी हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते. इसको मैं यहाँ पे लेके आती हूँ. So इस x को हमने z में कन्वर्ट जब किया तो ये आ जाएगा z is greater than 2.00. So इसका मतलब है x is greater than 700 बराबर है z is greater than 2.0, क्योंकि इस 700 पे z की वैल्यू 2 थी. अब इस greater than को हम लोग लिख सकते हैं z is greater than 2.00 है. इसको मैं लिख सकती हूँ थ्योरम नंबर 10.3 के अकॉर्डिंग 1 minus phi of 2.00. Now I will use again table number 9 and will solve it. We'll find its value. 1 minus phi of 2.00 को मैं देखूंगी टेबल नंबर 9 में. ओके 2.00 को 0 में देखा तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई 0.97725. Okay, now I'll solve it by using calculator. 1 minus 0.97725, that is equals to 0.02275. So this is your answer. Now we will move to the part 3, that is okay, now we want to find the probability that candidates receive scores between 350 to 670. So 350 to 670, between 360 to 350 to 670. 350 to 670. इसको इस तरह से लिखा जा सकता है 350 is less than x is less than 670. Between का साइन आपको पता है कि इस तरह से डालते हैं. अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास x की 2 वैल्यूज हैं 350 एंड 670. सो अब हम इन दोनों को पहले z में कन्वर्ट करेंगे. सो वी नो आई एम जस्ट गोना कॉपी पेस्ट द फॉर्मूला ऑफ z. देखिए इससे पहले जितने भी पार्ट्स आए हैं उसमें अगर आप नोटिस करें तो हमारे पास x की सिर्फ एक वैल्यू थी जिसको हमने z में कन्वर्ट किया था. अब यहाँ पे हमारे पास z की 2 वैल्यूज हैं जिसको हम लोग दोनों को कन्वर्ट करेंगे, x की दोनों वैल्यूज को कन्वर्ट करेंगे z में. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लोअर वैल्यू लेते हैं विच इज 350. नाउ सब्स्टिट्यूटिंग x is equals to 350. I can write it as x1. 2 वैल्यूज हैं तो पहली वैल्यू को मैं x1 कह देती हूँ, that is equals to 350, and x2 is equals to 670 and remaining values.
Now z की पहली वैल्यू x1 that is equals to 350 minus 500 divided by 100, and we have another value of z which is 4x2, right? The second value of x is 670, the value of mu is 350, and sigma is 100. Sorry, the value of mu is 500 and the sigma is 100. So these are the two values of z. The first value is minus 1.5 minus 1.5, and the next value of z is 1.7. Obviously, two decimal numbers तक लिखना है तो minus 1.50 and 1.70. So ये दो values हैं. अब मैं basically इसको इस form में लिख सकती हूँ. Now we want to find probability. अब जब मैं x को z की form में लिखूंगी तो ये इस तरह से लिखा जाएगा. Probability that minus 1.50 is less than z is less than 1.7. So now हम इसकी जगह अब ये find out करेंगे. Basically हम probability x की ही find out कर रहे हैं, लेकिन x को z में convert करके तो उसके थ्रू फाइंड आउट करें, क्योंकि z का टेबल हमारे पास बुक में अवेलेबल है और z के थ्रू सॉल्व करने के लिए हमारे पास थ्योरम्स अवेलेबल है. सो आप इस बिटवीन के साइन को ऑब्वियसली इस तरह लिख सकते हैं. It's phi of upper value 1.70 minus phi of lower value minus 1.50. Now again we will use table number 9 and we will check the value of phi's. पहले हम 1.7 की वैल्यू देखेंगे. 1.7 को 0 में. ओके 1.7 ऊपर है. 1.7 को जब 0 में देखा तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी 1.7 को 0 में 0.95543 0.95543 माइनस, अब हमने देखना है माइनस 1.5 को 0 में minus 1.5. दिस इज minus 1.5. इसको जब 0 में देखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.06681. तो आपके पास जब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा minus 0.06681. That is 0.88862. So this is your answer.
I'm sure आज का lecture आपको समझ आ गया होगा. We have talked about normal distribution, how to solve a normal random variable. We will first transform it into a standard normal. In short, we will convert x variable into z, and then we will use table number 9 to solve the probabilities, either it is greater than or less than or between. और अगर आपको मॉड्यूलस वाला क्वेश्चन भी आ जाता है तो ऑब्वियसली हमने थ्योरम नंबर 10.4 जो है वो यूज़ किए थे. सो एक्सरसाइज में से जो आपने क्वेश्चन करने हैं वो है क्वेश्चन नंबर 1 सारे पार्ट्स एंड क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए. So this is your homework. See you in the next lecture. Allah Hafiz.